वेलकम, यू आर वॉचिंग आई टू आई, आपका पसंदीदा कार्यक्रम और आपके साथ मैं हूं अभिलाषा। हर बार हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जुडिशरी की नामी और दिग्गज शख्सियतों से। इस बार भी हमारे बीच एक ऐसे ही शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने बिहार से अपने करियर की शुरुआत करते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय में जज के तौर पे पदभार संभाला और एक से एक केसेस का न सिर्फ निस्तारण किया बल्कि अपनी सोच, अपनी दूरदर्शिता के लिए भी जाने गए और प्रेरित किया है अपने प्रोफेशन के कई लोगों को, और आने वाली पीढ़ियां भी काफ़ी कुछ सीखेंगी उनसे। जुडिशरी से जुड़ी तमाम इन बातों को गहराई से समझने के लिए मेरे सहयोगी पारसा वेंकटेश्वर राव भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उनके ज़रिए भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज शिवकीर्ति सिंह जी हमारे बीच हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे खास कार्यक्रम। धन्यवाद अभिलाषा। You started your career in 1977 yes, as a lawyer. Yes. And that was an important year in the history of India when the emergency was lifted. The first non-Congress government came into power at the center. Yes. Was it? Did you feel that you were entering a new era of history when you entered the legal profession? Yes, we had that kind of feeling because of the after effects of emergency, where was very much evident in our mind, and we took it as a matter of pride that now we are joining a profession where there will be scope to challenge any excesses, etc., anything affecting the liberty of the people. It inspired us rather. We felt very happy to join. 2 साल का एक ऐसा भी वक्त आया था आपके, जब आपने एज लॉयर शुरुआत की, जब आपने ब्रेक लिया और आपके सीनियर लॉयर्स ने भी आपको काफ़ी गाइड किया। वो क्या ऐसा मौका था जो आपने ब्रेक लिया 2 साल का, और उसी वक्त शायद आपके पिता भी रिटायर हुए थे? 2 साल का ब्रेक नहीं था अभिलाषा। वो 2 साल का समय ऐसा था जब मेरे लिए कुछ कठिनाइयाँ थी जी। जो इस लीगल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उनको पता चलेगा कि जब परिवार का कोई सदस्य जज है और उसी के परिवार का कोई प्रैक्टिस करने आता है तो उस पर अनेक तरह के प्रेशर्स पड़ते हैं। लेकिन इनिशियल पीरियड में 2 साल तक मैं शेल में चला गया था, एक तरह से सहमा हुआ था क्योंकि मुझे अजीब लगता था। Was there a convention in those days that if one of your family members was on the bench that you couldn't practice, or you avoid that particular judge? No, I could not practice in his court, but if I appeared in a matter then his court got avoided. He was a senior judge, he was a very seasoned judge, and therefore people knew that he cannot be misled, and if there was any weak case it is going to meet its fate. So I think that there was a ploy to engage me and get the matter out of that court. So what is the kind of changes you have witnessed first as a lawyer through the 1980s, and then I think late 1980s you became the judge, and that was a transition from one phase to another. As a lawyer, was there any big transformation in the profession? I have seen ups and downs and up. There was a Guru Shishya Parampara, a teacher, and they taught people like old ashrams. So that used to be the practice in district courts and even in high courts. I am not confident about Supreme Court. So there used to be a chamber of a senior. He had good number of briefs. There will be 8 to 10 juniors if his chamber had enough work, and he would keep on analyzing, guiding, and we used to learn from our seniors that way. So with enough number of competent juniors, the seniors also had the time to distinguish themselves, and in the reverse, the juniors also learnt a lot. सर, बार बेंच रिलेशन को लेकर आपका नाम बड़े ही अदब से लिया जाता है, खासतौर पे जब आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में आए। तो आपने भी कहा कि वो वक्त आपके लिए अनफॉरगेटेबल है जो वक्त आपने वहाँ गुजारा, और वहाँ के जूनियर्स भी कहते हैं कि किसी भी मुश्किल की घड़ी में जब आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए थे तब भी वो आपको कभी भी कांटेक्ट कर लिया करते थे आपकी गाइडेंस के लिए। बार बेंच रिलेशनशिप को बेहतर बनाने में एक जज की भूमिका कितनी अहम होती है? बहुत ज़्यादा। जज की भूमिका जो है सो इतनी अहम है। जज अगर अपने आप को जज समझता है, एक अलग क्लास समझता है, तब तो बड़ी मुश्किलें हैं। लेकिन अधिकांश जज, जैसे मैंने हमेशा ये महसूस किया कि मैं बार का एक पार्ट हूँ। टेम्पररली आई एम सिटिंग ऑन द अदर साइड and my friends are on the other side, and their problems and my problems are common.
So we both belong to a judicial family. So there is no division on the lines of bench and bar. Then the situation becomes very different. You know, there is a lot of cooperation, understanding. So I indeed got a lot of cooperation from Allahabad bar, even Lucknow bar. I had no problem. And it was such a pleasant experience that there were some apprehensions. Few things were being spoken badly about Allahabad High Court, even by some Supreme Court judges. So I had a different experience. I felt very happy there. The bar was very informed, educated. They could assist me much better way than what I had expected. सर, लिटिगेंट्स को फ़ायदा होता है जिस तरह के रिश्ते के और काम करने के तरीके की बात आप कर रहे हैं कि बार और बेंच में अगर आप एक फैमिली महसूस करें, तो क्या इससे लिटिगेंट्स को फ़ायदा होता है? पूरे सिस्टम को फ़ायदा होता है. लिटिगेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे जुडिशियल सिस्टम का. अगर रिलेशनशिप कॉर्डियल रहता है तो एक तो हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में वातावरण अच्छा रहता है. इफ एटमॉस्फेयर इज गुड देन टाइम इज स्पेंट इन ए प्रोडक्टिव मैनर. वो 1 घंटे तक जो कुछ अननेसेसरी एक्सचेंजेज होंगे वो हो जाते हैं बहुत प्लेजेंट एक्सचेंजेज. क्वेश्चन आंसर हो गया रिलेवेंट, एंड हो सकता है उसी टाइम में जजमेंट भी हम लिखा देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं. अदरवाइज आर्गूमेंट्स अननेसेसरी लेंदी होते रहते हैं अगर हॉस्टिलिटी का थोड़ा सा भी एटमॉस्फेयर आ जाता. तो हैंडलिंग द कोर्ट अफेयर्स in a friendly and in a manner where you can guide the bar and they can have trust in you. सर, आपके लिए चैलेंजिंग ज़्यादा क्या रहा? बतौर लॉयर, एक सीनियर लॉयर के तौर पे करियर ज़्यादा चैलेंजिंग रहा, या फिर बतौर न्यायाधीश? दोनों ही कामों की तुलना करते हुए बताइएगा कि कहाँ पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. Personally, my journey, life journey as a judge was more challenging, and I enjoyed it more because of temperament. As a lawyer, I had no choice over briefs. अगर वो किसी wrong doer का आया है, a person who has committed serious crime, I can't say no. I defend him to the best of my ability. I did, but that didn't give me the pleasure which I got as a judge, because I was in a position to decide who is right, who is wrong, who should get relief, who should not get relief, where justice lies as per law. So this gave me more satisfaction. Do you think that very good lawyers who can argue on any side, who love arguments, do they make good judges? Not necessary. Not necessary. A good lawyer is not always a good judge. Not always a good judge. Sometimes they are too headstrong and too much opinionated, and may not extend the respect and courtesy which is due even to an average lawyer. Because an average lawyer may not appear that bright, but in a particular case he may have worked hard and developed points worth consideration. So I don't necessarily, in my estimate, a judge must be capable of doing hard work, because it is a very difficult task to sit for so many hours, keep on taking notes and then deliver judgments, and keeping an eye on the clock also, because there is a lot of work to be done. It requires a different temperament. Different temperament, and if you show impatience, as I said, friction creates more delay. So temperament must be very friendly. So a person who may be a real genius may not have that temperament. Would you agree that the suggestion made by Prime Minister Narendra Modi for a All India Judicial Service is something that would help in recruiting the right kind of judges? I have some reservation because of ground realities. All India Civil Service is one concept which was continuing from the British time, Indian Civil Service, so states had got used to it. It was a very interesting point you have raised, Mr. Rao. People from ICS used to opt and become judges, and I have found many good judges from ICS. So all India services who have been selected through rigorous test on merits, they could make good judges.
So I don't deny that by creating a service based on selection, on merits, we may have very good judges. I'm not denying that. Rather, I'm an advocate, but in a slightly modified form. In my view, many of the states in the present scenario will not be agreeable to man their lower judiciary and even High Court totally from outside. So instead of naming it as All India, there can be, cadre wise selection. जी. For each state you create a cadre. सर, आपने थोड़ा इंसिस्ट किया था हायर जुडिशियरी के लिए एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, इसके पीछे क्या वजह? मंशा ये है कि लोअर जुडिशियरी में the documents are in the local dialect, local language. We need not disturb that. And we are getting good people and selection procedure is at place. What is more disturbing is how to have good judges at say Superior Judicial Service, ADJ, District Judge, then High Court, then Supreme Court. Even ADJ, DJ mostly by promotion they come, so that is not also area of much concern. So area of concern is High Court and Supreme Court. What I feel loudly that we can first decide what should be the qualifications for working as a High Court judge. What should be the qualification? Should the person must have argued about at least 100 cases on his own or 50 cases. His income must show that he has a good practice, so that he has exposure to the profession and to the courts. And then his police record should be good. He should not be member of any political organization in an explicit way. Otherwise people start losing faith. If there is a person who belongs to the other political parties, he was my political opponent till yesterday, how can he decide my case? He is going to have bias. We don't want any bias against judges. So we can lay down qualification norms and then select the applications, apply the norms, then find out who are qualified, come within the net, ask them to take a test through a especially constituted body like UPSC on the lines of जैसे पूरे संघ के लिए होता है, तो कार्डर वाइज स्टेट्स के लिए भी, बट एक जगह और सब जगह से एक्सपर्ट्स ले लें, जो क्वालिफाइड आ जाते हैं उनको एग्जाम में बैठाइए और मेरिट पे उनका सिलेक्शन कीजिए. हाई कोर्ट के लिए अलग या डिस्ट्रिक्ट रखिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग रखिए, प्रमोशन का कोटा अलग रखिए, डायरेक्ट रिक्रूट्स का अलग रखिए. तो जो डायरेक्ट रिक्रूट्स आएंगे उनका कैसे सिलेक्शन होगा. प्रमोशन वाले भी आते हैं तो इट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली अ प्रमोशन. इवन हाई कोर्ट जजेस coming from the services are elevations, not promotions. सर, जो प्रेजेंट जनरेशन ऑफ लॉयर्स है और जो आने वाले जनरेशन के लोग हैं, या यूं कहें कि जो अभी लॉ स्टूडेंट हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और कैसे देखते हैं आप उनको? जिस तरह का एजुकेशन आपको मिला, क्या वो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन लॉ में मिल रहा है बच्चों को? कैसे आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखते हैं? अच्छा प्रश्न आपने पूछा अभिलाषा. मेरे हिसाब से आज के दिन लॉ का एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज मच बेटर. हम जो अप्स एंड डाउन्स एंड अप्स बोल रहे थे, तो हमने बताया था कि गुरु शिष्य परंपरा में अप्स थे, देन देयर केम डाउन्स. वो सिस्टम कम हुआ तो हमारे पास जो लॉ कॉलेजेस 3 इयर्स डिग्री कोर्स करके आ रहे थे, देवर पीपल ज्वाइनिंग लीगल प्रोफेशन एज ए लास्ट रिसोर्ट, जो हर जगह फेल करके आ रहे थे. तो देन दैट क्रिएटेड ए प्रॉब्लम फॉर पुअर क्वालिटी एवरीवेयर, बिकॉज यू रिक्रूट जजेस ऑल्सो फ्रॉम द बार. तो ये प्रॉब्लम कुछ साल चला. Then came the brilliant stroke, Bar Council and Supreme Court के इनिशिएटिव से बेंगलोर में जो लॉ इंस्टीट्यूट है 5 years कोर्स, उसके लाइन पे अब पूरे देश में बन गया है. नाउ वी आर गेटिंग वेरी गुड प्रोडक्ट्स. Although unfortunately majority of the students are joining the corporate world, but जो वैसे बाई ऑप्शन धीरे धीरे आ रहे हैं, their quality is much better than what we were having in 80s and 90s. तो ये फिर डाउन होके फिर अप पे है. Another 10 years I believe that we'll have enough good law students capable of manning all the good posts, including higher judiciary. So our problem will get resolved in few years. I'd like to draw your attention to a very significant judgment you and Justice Deepak Mishra delivered in June with regard to Article 21
when the MP police, Madhya Pradesh police Two arrested two ladies from correct, I Pune, remember. and you have really reasserted this important fundamental right of Article 21 of protection of life and personal liberty. Do you think the Supreme Court is coming to interpret the Constitution in very significant ways? This was one of the rare cases in recent times. I think our peers, senior judges have done so well. Article 21 has been placed on very high pedestal. Nothing much needs to be done now, but in individual situations we are invoking those very principles, and depending upon the sensitivity of the matter and sensitivity, you can say, of the judge also. So it was a very touching scenario when we went through the facts that the duo mother and daughter, we felt that they have been harassed for extraneous reasons, and therefore we expressed ourselves in no uncertain terms. So this is a facet of Article 21, well established, but yes, sometimes it is necessary to reiterate the golden principles because people tend to forget it, especially the police and the executive. So they have to be reminded once again what are the democratic expectations and norms. बिल्कुल सर, एक केस में 498A पर भी आपने कहा था कि FIR लॉन्च होने में थोड़ी सिंपैथी दिखाने की ज़रूरत है पुलिस की तरफ से। एक और केस सर जो आपके कार्यकाल में आया, नीट का, बहुत ही ट्रिकी केस था और पूरे देश में नज़र जो थी वो सुप्रीम कोर्ट पर ही थी क्योंकि युवाओं से जुड़ा हुआ ये मसला था। किस तरह से हैंडल किया आपने? क्या हम चूँकि yesterday was my last day in the office, so I can disclose, हमारे सामने सबसे अहम मुद्दा था कि देश को कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स मिले। ऐसे रिजेक्ट्स जिनका एडमिशन कभी नहीं हो सकता था मेडिकल में, उनको गलत ढंग से एंट्री दे करके चांस देना, और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है बिकॉज पैसे का बोलबाला बढ़ रहा है जी। तो हमारा ये था, उद्देश्य ये था कि कॉम्पिटेंट लोग ही मेडिकल में एडमिशन पाएँ। तो नीट के अलावा कोई उपाय नहीं था क्योंकि एजुकेशन एक नोबल इंस्टीट्यूशन से एक कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन ग्रेजुअली हो गया है। तो इस हालत में लेजिस्लेशन से इंटरवीन करना गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी था। जब तक नहीं हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ ध्यान में देना था, पीपल्स हेल्थ एंड द पीपल्स राइट टू हैव देयर हेल्थ ओवरसीन बाय कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स, ये एक एस्पेक्ट हमारे दिमाग में था बिना किसी के बोले हुए। और दूसरी बात थी कि ये प्रॉफिटियरिंग का भी एंड होना चाहिए एजुकेशन में, बिकॉज दे आर नॉट हेल्पिंग। जो इंस्टीट्यूशंस बन भी रहे हैं वो उसमें अधिकांश स्टेट्स में बड़े पुअर हेल्थ में हैं। तो अगर स्टूडेंट्स चले भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, बट फॉर फ्यू देयर आर गुड एक्सेप्शंस। लेकिन कुछ सहूलियतें भी आप लोगों ने दिया, कुछ राहत भी ऑर्डर्स में आया धीरे धीरे, क्योंकि चेंज में आदमी को बहुत रिजिड नहीं होना चाहिए, लोगों को भी यूज टू होने का समय मिलना चाहिए। तो ये This raises the important question which judges and judiciary as such face, the conflict or the dilemma between social justice and meritocracy. Social justice और meritocracy में कोई rivalry नहीं है। One has to be very clear where merit alone is absolutely a must, it can't be compromised. But there are large areas where it's even slightly less merit will do. People cannot be left out of the mainstream because of the historical reasons, the way our country has come to be united, consisting of several parts. There were princely states where there was no progress. There were northeastern regions which was totally neglected. There were no communications. So we have to integrate them into the mainstream, the nation. Therefore, if it generates a feeling that they are no longer neglected by giving them some representation, that should be given, because there are large areas where slightly less merit will not affect. But then when a meritorious person is affected, he develops some grievance. We have to educate the people mentally that
the number of offices which are available in the public domain for reservation, etc., is not very large compared to the population and the number of people who are joining different professions and earning. Therefore, it is rather a symbol and sometimes participation in power. If a reservation is being given to women in panchayat, etc., it's actually empowering them. They are realizing their self-worth and power. Similarly, there may be a scenario where in politics it is necessary to give representation. But it may not be. So do you see that affirmative action as such should be not held back, but should be used very wisely? So if you need a professor of nuclear sciences, I think to give it to a less meritorious person would be a crime. Because the people may not, the students may be deprived of very valuable guidance. So there the best must come. So you have to be very wise and select areas, and there should not be any apology about it. But it should be with an open mind, not with a view to grab larger share or to deny larger share. There are fields where we are accommodating people with handicaps, who are physically handicapped, but they cannot man every post. They will not be in the army. So we do it wisely. A person without a leg can do the typewriting work. A person without hands cannot do the typing. So we place them with wisdom, select them. So that is how we can give them, and they should be empowered. They should be adjusted. I would like to ask, I mean, this is a difficult question in the sense, if you have two candidates of equal merit, but one belongs to either a scheduled caste or a OBC, and then you have some other from the forward caste, equal merit, do you think affirmative action would go in favor of the OBC and the SC? Should go, in my view. There is no dilemma. It should go. Because first, thumbs up to that person, he has risen and come to become equal. Now he needs to be encouraged. सर, अब आपके शख्सियत से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो हमारे दर्शक नहीं जानते हैं। एक जज की कल्पना करते ही एक बहुत ही धीर गंभीर शख्सियत, न्यायप्रिय शख्सियत की तस्वीर आती है, लेकिन जिस वक्त आप काम नहीं कर रहे होते हैं तब आप कैसे हैं, ये हम जानना चाहते हैं आपसे। उस प्रेशर को जो आप झेलते हैं उसके बाद अपने आप को लाइटन अप करने के लिए क्या करते हैं? जब हम जज के रोल में नहीं रहते हैं कैसे लगते हैं, ये क्वेश्चन हमारे भाई, हमारे घर के लोग ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि आई फील वेरी एनर्जेटिक, very young in my temperament, I want to go to a movie, I want to go to a restaurant, I want to go and jog in the park, which I do. I go to Lodi Garden. Many people have told me yesterday, attorney also said that his friends were not believing that I am a Supreme Court because I had earplugs on and I was walking alone. So I don't need a company. I was enjoying old songs, which I always enjoy. So a judge needs a recreation, needs a relaxation, and those stereotype images are not true. सर, आपने फिल्मों की बात की, गाना सुनते हैं आप, ये भी बताया, तो किस तरह की चॉइस है आपकी, कैसी फिल्में देखना पसंद करते हैं आप? अभी भी हम कुछ फिल्मों का नाम भी नहीं याद रहता है, लेकिन हमें आमिर खान की एक दो फिल्में अच्छी लगी हैं, इधर हाल में आई थी। Music, you would love only the old Hindi film songs? Yes, unfortunately, I have not been listening too much to the new music. It goes back to the 60s and the 50s? 60s, 70s. 60s and 70s. Kishore, Rafi, Mukesh. These three are favorites. Lata is always evergreen. And so those are the songs when I was regularly seeing movies and I can identify. Later on, because of the other kinds of pressure. Any favorite songs that come to your mind? Many. चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों. I love that song from Mahendra Kapoor. Yes, Gumrah. Then from हम दोनों. सर, आपने गुरु शिष्य परंपरा की बात कही थी, और इस वक्त अगर मैं आपको गुरु कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो अगर हम गुरु मंत्रा की बात करते हैं तो जो एस्पायरेंट्स हैं, लॉ एस्पायरेंट्स हैं और जो लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए क्या गुरु मंत्र आप देना चाहेंगे? मेरा अपना नहीं कंट्रीब्यूशन नहीं है। जब मैं ज्वाइन करने जा रहा था प्रोफेशन, तो मैंने फादर से पूछा था कि बड़ा टफ लगता है ये रास्ता, व्हाट इज़ द golden
rule or what is your guidance? He said, you have to earn the respect of clients, colleagues and the courts. If you earn their respect, then nothing can stop you. But in order to earn their respect, you have to respect them. So you respect your client, you respect your colleagues, you respect the courts, then you can earn their respects in turn if you have put in hard work, if you are ready, if you know the subject, know the case, know the facts. And by taking care of these 3 C's, you can rise. That is what my father told me, and I kept it in mind. It has helped me. That's wonderful. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Rao. Thank you, Abhilasha. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और कई अहम बातें आपने जुडिशरी से जुड़ी हुई और अपने जीवन के अनुभवों से हमें बताई हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। आप समझ पाए होंगे कि न्यायपालिका का कितना अहम किरदार है हमारे समाज में, हमारे देश में। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अगली बार भी मुलाकात आपकी किसी ऐसी ही बड़ी दिग्गज शख्सियत से कराएंगे। फिलहाल आई टू आई में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। APN न्यूज़ पे खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।